Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan, and we are continuing with our charismatic trainer certification training. Today is February 19th, 2021, और आज हमारा सेशन नंबर 5 है. आज हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करने वाले हैं, और इससे पहले कि we come to those activities, let's understand how you use your voice effectively. आपका, it's one of the major tools that you have. Of course, as a trainer, as a public speaker, आप कहीं पर भी जाते हैं, when you present, you use your voice. You can't just show people slides and just stay quiet. You are a public speaker. Okay, किसी भी जगह पर, when you go and you speak, the most important thing that you use is your voice. Okay, even अगर आपको लोग देख ना रहे हो, फर्ज करो कि ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप you're running slides and आपने लाइट डिम की हुई है, but people still want to hear you. Okay, so your voice is a very important tool. उस voice को इस्तेमाल करना, उसको develop करना is a very important thing that you will find as a trainer. So I'm not a voice coach. I cannot coach you on improving your voice. There are several, agar aap search karen, you will find there are voice coaches who teach people how to do voice coaching. I'll give you some tips and we'll do some exercises that will help you improve the quality of your voice. Okay, so let's first understand few basics. So your voice tone comprises almost 40% impact of your message. And this is why you must take care of your voice and learn to use it effectively. According to, it's like different researches, हमारी जो message होता है, हमारी जो communication होती है, इसका तकरीबन 40%, some say 35%, some say 37%, but roughly around 40% जो impact है, it's through the way we say something. It's not what you're saying as much as how you are saying what you're saying. So when you're speaking, आपका जो tonality है, that comprises a huge amount of impact, आपके message का. अगर आपका नाम भी एक मुख्तलिफ टोन से लिया जाए, उसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे. अगर आपको सलाम एक मुख्तलिफ टोन से किया जाए, उसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे. So आपकी जो tone है, that is, and of course that tone is the voice quality. So, that's about like 40% of your message. Then people will respond to you and your message based on how you sound, and they will judge your attitude, your sincerity, your clarity about what you say from your voice. आपकी जो पर्सनालिटी है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, आप देखने में कितने अच्छे और बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हो, लेकिन जब आप बात करें और अगर आपकी जो टोन है, आपका बात करने का जो अंदाज है, आपकी जो वॉल्यूम है, अगर आप इस अंदाज से बात करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा. कंपैरेटिवली अगर आप बात करेंगे और आपकी टोन की क्वालिटी ये होगी, कंपैरेटिवली अगर आप बात करेंगे और अगर आपकी वॉइस की क्वालिटी ये होगी, सो आपकी जो साउंड क्वालिटी है, आप जब जिस अंदाज से, जिस टोन में, जिस वॉल्यूम में आप बात कर रहे होते हैं, people actually judge you based on the quality of your voice. I've come across a lot of people who जब बात करते हैं, they have a very high pitched voice, okay, and then they have this एक common चीज मैंने उनमें देखी, जो बहुत ज्यादा high pitched वाले लोग होते हैं, जैसे कि like I have problem, लोगों से relationship नहीं हो पाती है. You know why? Because वो जो high pitched आवाज होती है, even with total honesty, with total sincerity, they are saying something, but because of the high pitched voice, it's like it strikes people, okay, and people don't like it. Or I've come across people कि जब वो बात कर रहे होते हैं with total honesty, and these are really nice people. हम NLP में एक चीज कहते हैं, the meaning of communication is the response you get. So it's not what you intended, it's not what you said, but it's how other people respond. So those are some really nice people, just like honest people, nice people, very genuine people. It's just the way that they're projecting their voice.
तो वो जो टोन होती है वो इतनी चुभती भी होती है कि सामने वाला जो जो शख्स है वो इरिटेट फील करता है, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाई। इवन ना जो फील कर रहा है उसको पता चल रहा होता है, और ना जो बात कर रहा होता है उसको पता चल रहा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर द स्पीकर, इट्स द नेचुरल वे दे स्पीक, एंड दे नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे कि मेरी टोन की वजह से कुछ होगा। और फिर वो इट्स लाइक दे हैव दिस, पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। दैट्स बिकॉज द टोन दैट, एंड आई वर्क विद वुमेन who had this complaint कि जी मेरी ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे बड़े इरिटेट होते हैं, मेरी हर बात पे हो जाते हैं, फ्लेयर अप हो जाते हैं। And while speaking to them, and I noticed this and I pointed this out. And I said, okay, it's like if you speak like this and notice what happens. And all they had to do was literally change the way they were speaking, reduce that pitch a bit, and things started shifting for them. Okay. Nothing else, just the change of the quality of voice. So voice is really important. So you will find people actually judge you what you're saying on the basis of how you're saying what you're saying, on the basis of quality of your voice. So think about this. There are several people, some really good actors, famous actors, जिनकी जो वजह शोहरत है वो उनकी आवाज है. Okay, it's how good they sound. Then a monotonous voice bores people. It puts them to sleep. Hypnosis में there's a school of thought, and that's an old school in hypnosis, and that suggests that you speak in monotonous voice. So आपकी आवाज में किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, आपके जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सीधे सीधे बोलते रहें, और आप इस तरह से जब बोलते रहेंगे कि आप का सुनने वाला जो है थोड़ी देर के अंदर वो ट्रांस में चला जाएगा. और इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में हिप्नोसिस ट्रांस लेवल्स का जिक्र करते हुए एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का जिक्र किया था, जिसके अंदर हिप्नोटिस्ट ने एक हिप्नोटिक इंडक्शन, बेसिकली प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इंडक्शन को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद 100 लोगों के साथ में उसको प्ले किया, और उसके बाद उन्होंने कहा 60% लोग इसको सुनने के बाद हिप्नोटाइज हो जाते हैं. और उसकी वजह ये होती है कि जब वो इंडक्शन रिकॉर्ड की गई तो उसमें इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल मोनोटनस अंदाज में दी गई. अब होता क्या है, जो मोनोटनस अंदाज होता है, after listening to it for a little while, people get bored, and that boredom causes trance. Okay, so if your objective is to induce a bored trance and create boredom in people, perfectly okay if you speak with monotonous tone. However, that may not be a good idea to or a good way of communicating all the time. Okay, but sometimes you will find there are people who speak in monotonous tone, and that's not a very useful thing. So I just told you about this. A monotonous tone implies that the speaker is not interested in what they are saying, and what they are saying is not interesting. Okay, so the speaker is not interested himself or herself in what they're saying, and what they're saying is not interesting. Either of the two, that's what happens if a person's speaking in a monotonous tone. To be expressive, you may take pauses or change pace by speaking fast or slower. You may lower your volume and pitch or raise them. That depends आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं. एक चीज जिसकी मैंने पहले आपसे बात की, that's like congruence. The more congruent. So टोन में congruence से मतलब है कि आप जब जो कह रहे हैं, आपकी tone delivers the same message. If you're talking about excitement and your tone is not really exciting, and you're saying, I'm really excited about this, I'm really happy, then it is not going to have that. And if you're saying, I'm really sad, it's like, it's like, I have a very sad news to tell you. हमारी कंपनी के जो चेयरमैन साहब है, उनका कल रात को हार्ट फेल हो गया, और इस वजह से आज हम लोग को पहले उनके यहाँ जाना होगा. उनका जनाजा है दोपहर को 1 बजे, और बहुत ही दुख हो रहा है मुझे बात कहते हुए भी, मैं आपको बता नहीं सकता. It's like saying something and expressing tone different है. That's incongruent.
ओके मुझे याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त है, अच्छा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, हम लोग साथ जॉब करते थे। तो एक दिन आया एंड जस्ट लाइक यार वो रात को बाजी के यहाँ डाका पड़ गया। चेहरा उसका ऐसे ही है, रात को बाजी के यहाँ डाका पड़ गया, उसकी बड़ी बहन के यहाँ डाका पड़ गया। मैंने कहा यार बहुत मुबारक हो यार, बड़ी खुशी है। क्या बोलूं यार, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि बाजी के यहाँ डाका पड़ गया। ओके so it's like because it's the way people use आपकी जो tone है, it delivers, it's where the message is. At least that's where people pick. It's not what you intend, it's the way that you're delivering your message.